Hey guys, what's up? This is Faraz and this is Khadija. We are the couple unfiltered. This is a channel, this is our first channel and our first forte into content creation. So, हमारा ये channel mostly deals with pop culture, anything and everything that is currently trending, our interested, our life experiences, and most of all, it's about us. Yeah, it's about us sharing things, whatever we like, whatever we don't like, our opinions on movies, to music, to anything that interests us. uh, and yes, we both are working professionals. I'm a working professional at corporate company, and she's a teacher currently, currently teaching in a private sector. So yeah, this is our introduction. So Khadija, what's up? Hello everyone, I hope you all are doing well. And he already gave you the gist about this channel. Yes, we are from Couple Unfiltered, and this is safe and open to everyone. We are going to discuss about the things which we are interested in. And yes, one thing we should keep in our mind that we are not going to talk about religion and politics. So this is a safe place. It doesn't matter what your leanings are. हमारे यहाँ सब हर एवरीवन इज वेलकम हेयर. सभी यहाँ आ सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं रिगार्डिंग पॉप कल्चर, बट ओपिनियन हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट. ये हमारा चैनल है तो थिंग्स शुड would be according to what we like and what we don't like, but we want to make a small community of like minded people जो जो एक जैसा थॉट प्रोसेस रखें. एंड मोस्टली हम चाहते हैं कि हम इंजॉय करना चाहते हैं, यही है हमारा मकसद. क्योंकि हमारे पास जो हमें चीज़ें पसंद हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं होते हैं घर में लोग वो बोलने के लिए. तो हम चाहते हैं कि हम जो चीज़ें पसंद है वो हम शेयर कर सकें किसी के साथ. तो दिस इज़ आवर वे टू कन्वे कि दिस इज़ व्हाट वी लाइक एंड वी वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज वी डोंट हैव मेनी पीपल टू टॉक अबाउट इट. So yeah, it's an open place for everyone. Well, you are all are welcome here. It doesn't matter where you are from, where you are, or what you do. This is a fun place, safe place, and yes. So Khadija, what would you Yes. like to say? Yeah, one thing I have in my mind that you all are welcome to drop your comments in a comment section, and we will love to know about your thoughts and ideas and whatever. All right, you can share your Exactly. uh, thoughts. You are free to do. And so, Faraz, tell me about the things which you are interested in or you want to do in future. Yeah. So mostly, I'm a pop culture connoisseur of Yeah. a way. I since my childhood, I've been consuming comic books. Okay. I've started from Chacha Chaudhary, Yeah, Pinky, yeah. Millu, I and also read it. then I moved to better and more interesting grounds of Raj Comics, where I Yes. started reading about Indian superheroes based on our mythologies, or on based on our Indian values, and it was such a यूनिक है बिकॉज हम लोग कार्टून देखते थे बचपन में, बैटमैन सुपरमैन Yeah. के, और इंडिया में ऐसा कोई था नहीं. एंड व्हेन आई रेड राज कॉमिक्स आई वाज लाइक होली शिट, इंडिया में ऐसा हो सकता है, इंडिया में ऐसा कॉमिक्स अवेलेबल है जिसमें सुपर हीरो है. वो दिल्ली का सुपर हीरो है, परमाणु. डोगा इज द सुपर हीरो ऑफ मुंबई, एंड नागराज एंड ध्रुव आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिटीज, महानगर, राजनगर. सो इट वाज सो कूल टू सी के यार इंडियन सुपर हीरोज हैं, इंडिया में हैं ये लोग. एंड दैट फेल्ट सो गुड, सो रिवॉर्डिंग. मतलब एज अ 6 year old, 7 year old, I was like, what the hell, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है. So yeah, and also after that I got into novels, into reading, and I'm a huge fan of mostly I read fiction and science fiction and fantasy, and yes, Harry Potter has a huge impact on my life. I've been a huge fan of Harry Potter. I love Yeah. Harry Potter. Even I am. I've read them multiple times, and currently I'm in between On. an audiobook, a book too. I'm on a reread, and I'm listening. I'm using the audio format to listen to those books because I love how Stephen Fry narrate those books. His way of storytelling is probably the best I've heard, and I've heard many audiobooks. He's the best for me. You can share the link to them, the Potterheads, Yeah, no, those who are no, no, interested in reading. audible. It's an audible.
so can't share the link here. But yes, you Okay. can find it on Audible, and I think Spotify also have them, but you have to Okay. have a subscription for that. So currently I'm using Audible Okay. 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 for it. Yeah, so yes. And he has a great collection of comics Yeah, books. yeah. Uh, I we I'm will show you. not many comic books I have at this moment. I only have those books which impacted me a lot, because I used to have hundreds and hundreds of comics at a time when I was younger. But when we were shifting from Mumbai, to be honest, I am from Lucknow. I was born in Lucknow, but I was bottom in Mumbai. I have been in Mumbai since I was 3 years old, and I'm currently 35. So yeah, I've been in Mumbai for a long, long period of time. But between that, we went back to Lucknow for 2 to 3 years. During that shifting, my mom most sold off all of my comics. Only few handful left with me because I fought for them. ये मेरी Okay. है, मैं नहीं दे रहा, ये बहुत important है. So yes, I Yeah. have few, but I have a good better collection of novels. क्योंकि अब मैं Yeah. बड़ा हो गया हूँ तो मैं novels पढ़ना ज़्यादा prefer करता हूँ, because राज comics कुछ नया नहीं कर रहा है, and I really want them to do something good. A movie series will be great, but इंडिया में बहुत politics है, तो you have no idea क्या होगा. What about Okay. you, खदीजा? तुम्हारे क्या interest है? My interest, like uh, first I love to read the romantic novels like Fault in the Star, and there are 50 Shades of Grey. I read it. Twilight. Twilight. Yes, I read it. So I'm more inclined to reading the romantic novels. And second thing, yeah, I had a experience of I had a 5 years of experience in a teaching in a reputed school, Christchurch College, which is actually located in Lucknow, Hazratganj. She's from Lucknow. Yeah, I am from Lucknow. I bought up in Lucknow and got married and came Mumbai. Yeah, she's been in Mumbai for past 2 years. Past 2 years, we got married in November 2023 actually. So, and I'm fond of swimming also. Yes, I've learned swimming, and right these days, I really want to know the place where we can continue with this swimming practices or classes. I really want to continue. And because of my health issues, right now I gave up this teaching, but inshallah, I'll continue this also after some time. And yeah, and I love to know about new things. I'm always curious to know new things which is going on, and so I'm open. And so basically, I want to ask you, you tell me about something like your future planning or something like that you have in your mind. Future planning. Yeah. Future planning is like, I just wanna have fun with this channel. Yes. Yeah, I just want to share what I like. Also, I'm a MCU fanatic too, so I watch almost all the MCU movies in theater. And yes, currently waiting for Doomsday to arrive. Yes, we also watch the Fantastic Four Yeah, in there are theater. so many things which we are common Yeah, among we us. both like Harry Potter. Yeah, we are She's into Potterheads. MCU now. She has Yes, watched Endgame, Infinity he War. was the one who recommended me and Yeah, introduced this. And there are many other things like he loves to read all kinds of novels, but I'm more she's inclined more into to romantic romantic stuff. So novels yeah, and I romantic don't like stuff. romantic stuff. Not the Only romantic Fault in Our movies. Stars is what I like. I'm talking about romantic books, not the romantic movies Yeah, she doesn't actually. like romantic movies, but yeah, the books Recently, might have. just out of curiosity, like audience were crying and in the Sayara theater देखा and है all हम लोग Sayara. Sayara. So, but that was Nibba Nibbi, I would say. मुझे तो अच्छी लगी, I like it. मस्त थी. वो मुझे बिल्कुल Songs नहीं बहुत पसंद है. अच्छे. हाँ, songs के लिए तो I would say Even that both amazing. Ahan Pandey and Avneet Yeah, acted they did really well. amazing acting. But it was for 20s to 20. Yeah. When I was young, when I was 20 years, there was Ashiki 2 for us. So I never cried in Ashiki 2, but I didn't even cry in this. Yeah. But yeah, Ashiki 2 had an impact on people, not me. But my brother, he watched that movie with his then girlfriend, now wife. So he had a Ashiki 2 had an impact on him. But I like that movie a lot. But yeah, Sayara is also नहीं good. मुझे नहीं पता आई रियली डोंट नो कि वो लोग इतना रोए इतना मतलब इतना ज्यादा उन लोगों ने एक्ट किया अरे वो
रील्स था, रील्स को सीरियसली नहीं लेने का, हाँ राइट, ओवर एक्टिंग, सैड एंडिंग में नहीं है, मूवी का एंडिंग हैप्पी एंडिंग है, हाँ वे मतलब एंडिंग साथ में आ हैप्पी है, जाते हैं, हाँ बट नहीं, वो सिर्फ समझ लो तुम, वही है, पब्लिक का वो शुरुआत में पीआर की प्यार, तरफ से कुछ रील्स बने जो बहुत ट्रेंड में चले गए, और फिर आम पब्लिक नौटंकियां करने लगी जाती, तो मगर दैट सॉन्ग हैपेंस विद बहुत एवरीवन। अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत बहुत गाने हैं, खूबसूरत नो गाना, डाउट, मतलब अच्छी मूवी है, वो लव्ड नेटफ्लिक्स इट, पे है, हाँ यू वांना वॉच इट, इट्स अ सही गुड यार, टाइम, इट्स अ गुड टाइम। यस, नाउ वी आर वेटिंग फॉर डूम्सडे ना, डूम्सडे में तो अभी 1.5 साल। नहीं अभी वो कौन सी आ रही है, दिसंबर 19 दिसंबर को, यस्टरडे ओनली वी सॉ द ट्रेलर, अवतार, हाँ अवतार वी एश आर एंड वेटिंग फायर, फॉर दैट, यस हाँ, ओह माय गॉड, अवतार 1 थिएटर में देखी थी, अवतार 2 आईमैक्स में देखी थी, अवतार 3 भी you must देखेंगे। watch the trailer, अवतार इज so just too good for beautiful, me. So beautiful, yeah, this is our first podcast, so things are just chaotic. yes, From next episode onwards, हम लोग प्लान करेंगे yes, a segment wise or a dedicated podcast to a specific thing which we like. specific topic Yeah, but actually, today this is our first, so we just want you to give you a summary of what we like and what we don't. Mostly what we like. I don't like discussing things. I don't like bashing things here because I want things to be hunky dory here. लेकिन हाँ, अगर कोई चीज सच में बुरी लगेगी तो बुराई भी कर देंगे, ऐसी बात नहीं। so we are going to pick up the random topics actually, Yes. so this we have in my mind, and inshallah we'll देखते हैं कहाँ जाता है, और कमेंट सेक्शन ओपन है, हाँ जिसे जो भी कोई भी comments, टॉपिक हो जो आपके दिमाग में हो, जो आपको लगे कि yes, हमें अच्छा लगेगा, हाँ शेयर कीजिए, that's a great idea, और यस, और बताइए, और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, जी हमारी माइक क्वालिटी के बारे में बताइए, ताकि हम लोग इम्प्रूव, बट बी डोंट इंसल्ट, अच्छे से बताइए तो हम लोग जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम भी नए हैं। not the personal comments, Yeah, no personal comments. please, No need to personal comment unless and until we are insulting someone. Please don't make that a thing. we are not going to insult anyone, so we are expecting the same from Yeah. you people, all right, please maintain that decorum, Dignity थोड़ा maintain कर dignity, लें, decorum, बट हाँ, हम चाहते हैं कि सब enjoy करें यहाँ पे। Yes. यहाँ पे जो बातें होंगी वो ऑन पेपर होंगी, हम लोग रूमर्स डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो लिटरली मूवीज के बारे में पुख्ता न्यूज़ देते हैं, प्रॉपर न्यूज़ देते हैं विद फैक्ट्स। वी विल ओनली डिस्कस दोज काइंड ऑफ न्यूज़, अगर न्यूज़ डिस्कस करेंगे तो हम लोग रूमर्स नहीं डिस्कस करेंगे, yes, थ्योरीज डिस्कस कर सकते हैं वो, लेकिन आप बताइए हमें, अगर कोई थ्योरी आपके दिमाग में है, आप चाहें कि हम लोग उस थ्योरी को you डिस्कस can give करें। the example of Yeah, what kind of theories you are like talking about, MCU related theories, books related theories, इन जनरल किसी भी मूवी की, फॉर एग्जांपल अभी कौन सी मूवी आई थी जो बहुत ही जो थ्योरीज बन रही थी उसके ऊपर, वही तो मूवी आई थी जिस सब थ्योरीज, मैंने देखी, जैसे थामा आने वाली है स्त्री थामा, यूनिवर्स की, उस पर कोई थ्योरी आप वो बताइए, हाँ तो वो हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी थ्योरी जो आपको टॉपिक, कोई पॉप कल्चर रिलेटेड कोई टॉपिक है आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, तो वो डिस्कस करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप कुछ थॉट्स हैं जो क्लियर नहीं है, आप उसको शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, एग्जैक्टली, और मे बी अगर सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन भी निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम है आप शेयर करना चाहते हैं, तो कैन शेयर इट, ऑल्सो हैव फन, आप जोक्स शेयर कीजिए हमारे साथ, हम उन जोक्स पे भी रिएक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। और ये पॉडकास्ट एज अ कपल हम लोग चाह रहे हैं करना, क्योंकि yes, आई डोंट थिंक सो दे आर मोर पॉप कल्चर रिलेटेड पॉडकास्ट विद कपल्स, many पॉप कल्चर रिलेटेड पॉडकास्ट विद कपल्स, सो आई जस्ट वांट कि एक कपल क्या सोचता है, हम लोग दोनों यंग हैं और हम लोग बस ये चाहते हैं कि हम इंजॉय करें और आप भी इंजॉय करें, बस यही चाहते हैं। just to refresh our mind, यस या मोस्टली रिफ्रेश आवर माइंड आफ्टर हफ्ते भर का काम, yes, ये आउटलेट है जहाँ हम लोग कुछ बोल सकते हैं, हम लोग को जो पसंद है वो बात कर सकते हैं। yes, so I think it's time Yeah, to I think we should wrap it up. so See you guys. see you guys next soon. week. And one more update, हम लोग सैटरडे को, मोस्टली सैटरडे और संडे में से किसी भी एक दिन पोस्ट करेंगे हमारे वीडियोस, सो आप लोग अवेलेबल रहिए,
लाइक और करिए, लाइक किए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करिए, कमेंट भी सब्सक्राइब कीजिए मोस्ट वेलकम। हमारे चैनल कपल अनफिल्टर्ड को, बिकॉज वी आर अ कपल एंड वी आर अनफिल्टर्ड। एंड सी यू ओके, बाय आफ्टर नेक्स्ट। बाय, टेक केयर।